નાગપુર રમખાણોના માસ્ટર માઇન્ડના ઘર પર તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। આરોપીઓના ઘર પર બુલડોઝર સાથે અધિકારીઓનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચ્યો અને ગેરકાયદેસર બાંધકામ પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી। અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે નાગપુર ઘટનાના 2 આરોપીઓના ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યા છે। નાગપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને અનધિકૃત બાંધકામ તોડી પાડ્યા છે। વહીવટી તંત્રએ નાગપુરના મહાલ વિસ્તારમાં 17 માર્ચના રોજ થયેલા રમખાણોના માસ્ટર માઇન્ડ ફહીમ શેખના ઘર પર બુલડોઝર ચલાવ્યું। સવારથી જ ફહીમના વિસ્તારમાં ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો। ठीक है, MRTP नोटिस हमने दिया था इनको 24 आवर्स का। उसके बाद भी हमने आज कार्रवाई चालू की। कितना विकृत रूप से उन्होंने निर्माण किया था? कितना बड़ा प्लॉट एरिया है? कितना प्लॉट का एरिया कितना है? प्लॉट एरिया नियर अबाउट 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है। नोटिस कब दिया गया? नोटिस कब दिया गया था और क्या उन्होंने उसका जवाब दिया? 23 को नोटिस दिया था, उन्होंने जवाब दिया और आज हमने कार्रवाई। सर कि पहले मंजिल पे कितने रूम्स थे, दूसरे मंजिल पे कितने रूम्स थे, कितना बड़ा प्लॉट था और किस तरह से कार्रवाई हुई, कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुआ, कितने पोकलैंड, कितने देखिए ये कार्रवाई के लिए हमने एक पोकलैंड एक जेसीबी यूज किया हुआ है। कितने रूम थे सर? नीचे के फ्लोर पे, ऊपर के फ्लोर पे कितने रूम थे? अभी गांधीबाग जोन में भी हो रही है सर मराठी सांगे सर कितने घरों में और होने वाला है सर? ये नहीं पता आयडिया शहरातल्या इतर भागात कारवाई आहे। शहरातल्या इतर भागामध्ये गांधीबाग झोन मध्ये कारवाई कुठे कुठे आहे सर? गांधीबाग झोन कशा संदर्भातली कारवाई आणि कोणावर कारवाई होत आहे? अवैध बांधकामाच्या संदर्भात अवैध पण कोण आरोपी आहे की जे कोण आरोपी काय? आहेत त्यांच्यावर किती एकूण किती आरोपी आहे कोण सर किती कारवाई नाही ते मला नाही होत आहे? गांधीबागला कुठे सर? सर किती वाजता सुरू होईल? गांधीबागला तर मला माहित नाही, पण गांधीबाग झोनला कारवाई आहे। सुरू आहे तुम्ही तिथे सुरू होईल। આ કાર્યવાહી બાદ પોલીસે ફહીમના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં કોઈ પણ ઘટના ન બને તે માટે ભારે સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી અને ડ્રોન કેમેરાથી વસાહત પર નજર રાખવામાં આવી રહી હતી। આ જ ઘટનાના બીજા આરોપી યુસુફ પર અનધિકૃત બાંધકામનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે। જોહરીપુરા મહોલ્લામાં યુસુફ શેખના 4 માળના મકાનમાં અનધિકૃત બાંધકામ તોડી પાડવામાં આવ્યું। યુસુફનું ઘર વસાહતની ગીચ વસ્તીમાં હોવાથી જેસીબી ત્યાં પહોંચી શક્યું નહીં, તેથી યુસુફના ઘર પર હથોડા વડે કાર્યવાહી કરવામાં આવી। अतिक्रमण काढताना महानगरपालिकेला सहाय्य म्हणून आम्ही 1 DCP, 2 ACP, 15 अधिकारी, 150 कर्मचारी, 2 SRPचं प्लाटून आणि 2 RCP अशा प्रकारचा बंदोबस्त त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे। सर इथे काही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून आणखी विशेष व्यवस्था होती, कॅमेऱ्याची, ड्रोनचे कॅमेरे, काय सांगाल त्याबद्दल? जे बाकी जे सहाय्य म्हणजे व्हिडिओ शूटिंग, ड्रोन शूटिंग, फोटोग्राफी, त्याचप्रमाणे ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था, फायर ब्रिगेडची व्यवस्था, अशा प्रकारची सगळी व्यवस्था ठेवलेली आहे आणि आजूबाजूच्या गल्ल्यांमध्ये बंदोबस्त आहे, पेट्रोलिंग आम्ही ठेवलेली आहे आणि कुठेही हे प्रक्रिया पूर्ण जी आहे ती अतिशय शांततेत सुरू आहे। फहीम खान हा मुख्य आरोपी होता दंगलीतला, त्याच्या विशेष फक्त त्याच्या घरालाच पाडण्यात आला आहे, बाकी कारवाई महानगरपालिकेने झाली नाही, काय सांगा? नाही, हा निर्णय जो आहे अतिक्रमण हटवण्याचा हा नागपूर महानगरपालिकेचा निर्णय असतो। पोलीस हा बंदोबस्ताच्या भूमिकेत असतात, त्यामुळे त्याविषयी आम्ही बोलणं हे उचित राहणार नाही। पालिकेकडून म्हटलं जात आहे की पोलिसांनी सांगितलं होतं की हे महानगरपालिका प्रशासनाने सांगितलं होतं की घर पाडायचं आहे, काय सांगा? नाही, अतिक्रमणाचा जी निर्णय होतो तो पूर्णपणे महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी हे घेत असतात। पोलिसांकडून असं अतिक्रमण पाडण्याबद्दल कधी आदेश दिला जात नाही किंवा त्याबद्दल सांगितलं जात नाही। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे बस्ती में आज एक तरीके से ड्रोन से नजर रखी जाएगी। हाँ, ड्रोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ वीडियोग्राफी वगैरह वो भी हो रही है। पूरे एरिया में पेट्रोलिंग हमारी शुरू है और बाकी शहर में शांतता रहे, जहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पे शांतता का माहौल रहे, इसका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं।